हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, तो बिल्कुल लास्ट तक इसको देखिएगा क्योंकि आज के सेशन में मैं सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने जा रही हूं। जी हाँ, जो कि पर्सनल इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये जरूर पूछा जाएगा, कंपल्सरीली दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑफ यू इन योर एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू। क्या है ये क्वेश्चन? द मोस्ट dreaded question, tell me 10 strengths and 10 weaknesses of yourself. Strengths and weaknesses पूछना एक बहुत ही कॉमन पैटर्न होता है किसी भी इंटरव्यू का, और एसएसबी इंटरव्यू इज नॉट एन एक्सेप्शन इन दिस केस। सो द इंटरव्यूइंग ऑफिसर कैन आस्क यू दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ज्यादातर कैंडिडेट्स इसमें फंस जाते हैं। वो बोलते हैं इधर तो मेरे अंदर वीकनेसेस है नहीं, या फिर है तो बस दो है, या जब अपने स्ट्रेंथ्स बताते हैं तो बस 10 में से 3 या 4 स्ट्रेंथ्स ही बता पाते हैं। तो बेसिकली आज के सेशन में मैं आपको ऐसे 5 सैंपल आंसर्स देने जा रही हूँ जिसमें आप 10 स्ट्रेंथ्स और 10 वीकनेस देख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपको आइडिया भी हो जाएगा किस तरह अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को बताना है इन अ वेरी क्लेवर वे। स्ट्रेंथ्स बताना बहुत इजी है, लेकिन वीकनेस बताने में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं क्योंकि वो ऐसे एक्सट्रीम वीकनेस बता देते हैं जिससे इंटरव्यूइंग ऑफिसर के माइंड में उन कैंडिडेट्स को लेकर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो आज के सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि इस सेशन के बाद आपके दिल में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको स्ट्रेंथ वीकनेसेस कैसे प्रोजेक्ट करना है, कौन सा स्ट्रेंथ बताना है, कौन सा वीकनेस नहीं बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सैंपल आंसर के साथ रिगार्डिंग 10 स्ट्रेंथ्स ऑफ योरसेल्फ। अब जो मैं पहले स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करूंगी और मैं आपको उसके लिए 5 सैंपल आंसर शो करूंगी। फॉर द 10 स्ट्रेंथ्स ऑफ योरसेल्फ, दिस इज द फर्स्ट सैंपल आंसर। सो लेट अस सी व्हाट स्ट्रेंथ्स यू कैन प्रोजेक्ट। फर्स्ट इज लीडरशिप। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे सकते हो, कैन जस्ट रीड देम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अडेप्टेड लीडिंग टीम्स एंड इंस्पायरिंग अदर्स टू अचीव कॉमन गोल्स। Second, adaptability. I quickly adjust to new environments and challenges. Third, discipline. I maintain a high level of self-discipline in all aspects of my life. Fourth is communication. I can articulate my thoughts clearly and effectively. Fifth is problem solving. I enjoy tackling complex problems and finding innovative solutions. Sixth is teamwork. I work well in teams, valuing collaboration and mutual support. Seventh is resilience. I can handle stress and bounce back from setbacks. Eighth is organizational skills. I am good at managing my time and tasks efficiently. Ninth is empathy. I understand and share the feelings of others, which helps in building strong relationships. And 10th is strategic thinking. I can plan and think ahead, considering long-term outcomes. तो आप यहाँ पे examples भी दे सकते हो about the different things that you have done in life, so that the interviewing officer can get a clarity about why you think that you have this strength. Okay, तो आप यहाँ पे specific examples you can portray. Moving on to the second sample answers. First is hardworking. Second is reliable. Third is curiosity. Fourth is initiative. Fifth is positive attitude. Sixth is attention to detail. Seventh is flexibility. For example, you can adjust your plans and actions when circumstances change. Goal oriented, honesty, and lastly is dependable. People depend on you when they need you and you fulfill your responsibilities well. Third answer for the 10 strengths of yourself will be determination, creativity, your organization skills, empathy, your empathetic nature towards people, confidence, resourcefulness, collaboration, that you love to thrive in a team environment and contribute positively to the group dynamics, disciplined nature, analytical nature. For example, you can analyze situations and data effectively and then make decisions, and optimism. Okay, even in difficult times, you maintain a positive outlook. Fourth sample answer for the strengths will be hardworking, dependable, curious, positive attitude, initiative, detail-oriented, flexible, goal-oriented, honest, and team player. Fifth answer for this strengths will be leadership, adaptability, discipline, communication, problem solving, teamwork, resilience, that is you can handle stress and bounce back from setbacks, organization skills, empathy, and strategic thinking. So here are 10 strengths of yourself. So you can just take out, or you can just choose whatever you think you have strengths in you, and you can write down your own strengths, 10 strengths of yourself. Now we will move on to 10 weaknesses of yourself. So the first sample answer for this will be perfectionism. So sometimes I focus too much on details and strive for perfection, which can slow me down. Second, impatience. I get impatient when things don't progress as quickly as I expect. Self-criticism. I tend to be overly critical of myself, which can affect my confidence. Delegation. I find it hard to delegate tasks, preferring to do all the things myself. Public speaking. I still get nervous speaking in front of large groups, though I am improving.
Risk averse. I tend to avoid taking risks, sometimes missing out on opportunities. Stubbornness. I can be stubborn and insist on my way even when other ideas are better. Overthinking. I often overthink situations which can lead to unnecessary stress. Work-life balance. I sometimes struggle to balance work and personal life. And assertiveness. I need to be more assertive in voicing my opinions. Second sample answer for the weaknesses. First is overcommitting. I sometimes take on too many tasks, leading to burnout. Sensitivity. I can be overly sensitive to criticism, which affects my morale. Procrastination. I occasionally delay tasks, especially those I find uninteresting or boring. Indecisiveness. I struggle to make decisions quickly, weighing all options extensively. Reluctance to change. I'm sometimes resistant to change and prefer sticking to familiar routines. Perfectionism. My desire for perfection can lead to unnecessary stress and delays. Shyness. I can be shy, which sometimes makes networking or socializing challenging. Self-doubt. I experience self-doubt, specifically when faced with new challenges. Conflict avoidance. I tend to avoid conflict, sometimes at the expense of voicing my true opinions. And 10th, overthinking. I often overanalyze situations, leading to indecisiveness and stress. Third answer for your weaknesses will be impatience. I sometimes get impatience when results are not immediate. Perfectionism. I can be overly focused on making everything perfect, causing delays. Risk aversion. I tend to avoid taking risks, which can limit opportunities. Self-criticism. I often too hard on myself, which can affect my self-esteem. Public speaking. Speaking in front of large audiences still makes me nervous. Delegation. I find it challenging to delegate tasks and trust others to complete them. Stubbornness. I can be stubborn and resistant to other ideas. Overthinking. I tend to overanalyze situations, leading to stress. Work-life balance. Balancing work and personal life is sometimes challenging for me. And conflict avoidance. I often avoid conflicts, preferring to maintain harmony. Next, fourth sample answer for your 10 weaknesses can be procrastination. I occasionally delay tasks, especially those I find less interesting. Sensitivity. I can be overly sensitive to criticism, affecting my morale. Indecisiveness. I struggle to make decisions quickly, considering all options extensively. Reluctance to change. I sometimes resist change and prefer familiar routines. Perfectionism. My desire for perfection can lead to unnecessary stress and delays. Shyness, networking and socializing in large groups can be challenging for me. Self-doubt. I experience self-doubt, especially when faced with new challenges. Conflict avoidance. I tend to avoid conflict, sometimes at the expense of voicing of my true opinions. Overthinking. I often overanalyze situations, leading to indecisiveness and stress. And overcommitting. I sometimes take on too many tasks, leading to burnout. Your fifth answer, sample answer for your weaknesses can be more or less again the same thing. Perfectionism, impatience, self-criticism, delegation, public speaking, risk averse, stubbornness, overthinking, work-life balance and assertiveness. इसके अलावा भी अगर आपके पास खुद के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है, बट प्लीज मेक श्योर वीकनेसेस ज्यादा नेगेटिव ना हो, तो आप इस तरह अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के लिए जो चार्ट है वो बना सकते हैं और प्रिपेयर करके जा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके पर्सनल इंटरव्यू में एसएसबी में पूछा जा सकता है. 90% चांस होता है ये पूछा जाता है सारे कैंडिडेट से. एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव ऑल द 10 स्ट्रेंथ्स एंड ऑल द 10 वीकनेसेस ऑफ योरसेल्फ इन अ मच मोर क्लैरिफाइड मैनर. तो अगर आपको अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए ऐसे प्रिपेयर करना है तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप हमारे लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बना सकते हैं. We have also provided a lot of defense exam related courses through our app. So if you are preparing for any defense exam, you can get hold of this course. Just course subscribe करने के वक्त Warrior 10 का कोड आपको यूज करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है. That was it from my side and hope to see you very soon with something more helpful, informative and insightful for your upcoming SSB interview. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.